Good morning, students. Now I am going to discuss the program of report file. The first program is make a program to initialize slash input. It means you can initialize or get the input from the keyboard and swap the element of first half with second half. Very easy program. Okay, program number 1. So here I will have to declare one list or initialize. अगर आपने लिस्ट इनिशियलाइज करानी है तो देयर इज ए एल इज इक्वल टू देन इन स्क्वायर ब्रैकेट टेक द वैल्यूज. Okay, but if you want to get the input from the keyboard, then you will have to use eval, then input, enter, list. Okay, so first of all you will get the input of elements. Next is after getting input, now display the list before swapping. Display L. Now swap the first half with the second half. तो हमें फर्स्ट हाफ के एलिमेंट को सेकंड हाफ के एलिमेंट के साथ स्वैप करना है. तो जो आपके पास प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग मिड वैल्यू. मिड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ L डिवाइड बाय 2. ओके, नाउ for I in range, beta you will implement the program up to the half of your list. So starting from 0, last value is length of L divide by 2. So one is from beginning and another is from mid of your list. तो आप यहाँ पे m की जगह j भी ले सकते हो. This is your choice. So I am taking here j. Now how you can swap? L of I comma L of j equal to yes L of LJ j, then L of I. There is a automatically increase in I, but there is no any automatically increment in report j. file का program है ना? Yes, beta. This is report file program number 1. Okay, program number 1. Now increase the value of j by 1. Okay, so swapping will be there and display one message after print after swapping. Okay, now I'm going to run this program. Program number 1. Now next is I enter the list. Here I take 10, 20, 30,
40, 50, 60. Okay. The first half swapped with the second half. So this is my program number 1 of report 5. Clear? Yes, students, clear, beta? Harshika, clear? Yes, sir. Okay. Now I am going to create program number 2. So program number 2, make a program to initialize / input a list with positive and negative element and transfer positive element in list A and negative element in list B. So very simple program. ये देखो बेटा, तो आपने एक लिस्ट एंटर कर दी, ठीक है, एंड डिस्प्ले द लिस्ट. तो लिस्ट कंटेन, तो आपने एक मैसेज किया, लिस्ट कंटेन्स. नाउ declare one list A empty list, another list B empty list. Now you will execute the loop up to the length of your L, ठीक है. Now check if you want to check the element, तो इसमें रेंज लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है. for I in L, तो वो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट लेगा. I को आपने चेक करना है, is greater than equal to 0, ठीक है. If it is greater than equal to 0, it means you will add positive value in list A. So A dot append, what you add? You add I. Clear? Else means it is a negative I value. is less than or equal to 0. Yes, then B dot, no need to insert the condition, because if the value is not positive, it is not greater than equal to 0, it means it is a negative value. Then append I. And now type list A contains display A, and then print list B contains display B. So I am running this. To first list here some positive values, some negative values. So all the positive values goes to list A and all the negative values in B. Any doubt, beta? Any doubt? Gaurav, clear, beta? यस सर. सर एक बार कोडिंग शो कर दो. Yes, beta. This is coding, beta. Yes, Harshika? सर अगर हम लिस्ट में 0 इनपुट करेंगे तो वो लिस्ट ए में जाएगा कि बी में बेटा जाएगा? हमने लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब वो ए में जाएगा. इक्वल टू, ठीक है सर. ओके. थर्ड प्रोग्राम, make a program to initialize
slash input a list and swap the first element with the last, second element with the second last, and so on. But condition is that both the elements are even. तभी swapping करनी है, ठीक है? तो तभी आपने swapping करनी है अगर दोनों एलिमेंट even है. So here is program number 3. Here I am receiving the element. Okay. The list contains this message. Okay, fine. Now, no need to declare two extra lists. सर चेंज ज्यादा नहीं होगा, यही होगा, वही होगा, li, lj इक्वल टू lj और li, बस कंडीशन And लगेगी कि I'm i just- is divisible by 2 equal to Yes. 0. Himanshu, I'm just making the program. See the program at here. Take one variable j, that is it is the last element. ठीक है? तो लास्ट एलिमेंट कैसे आएगा बेटा? लास्ट एलिमेंट होगा कि जितनी आपके पास लेंथ है एल की, इसमें से -1. इफ लेंथ इज 5, the last element is 4. Okay, 0 to 4, 5 elements. So you start here. Here take I in range. तो इंक्रीमेंट आपने हाफ तक ही करना है. स्टार्ट फ्रॉम 0 और ऐसे लिख सकते हो लेंथ ऑफ L डिवाइड बाय 2. The execution of loop is always at from 0 to mid. Clear? Now for swapping, you will use Li. Li means L0, or last element is Lj is equal to Li, comma Lj, then Li, and after that you will make the decrement in j, because I will be increased, but there is no any decrement in j, but it will reverse the list. ठीक है? तो मैं इसको अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, उसको हमें सॉर्ट आउट करना है. आफ्टर स्वैपिंग, now list L contain so I am running the program here. The list contains suppose here 10, 4, 3, 2, 5, 6, 1. So it is totally reverse the list 1, 6, 2, 3, 4, 10. तो ये प्रोग्राम रिवर्स का बन गया. ठीक है? यस बेटा. दिस प्रोग्राम इज ऑफ रिवर्स. बट हमारी जो कंडीशन है कि दोनों एलिमेंट जो आपके पास जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट, इफ बोथ आर इवन, in that case you will swap. So I am taking here one condition here, putting one condition here. If L of I, then percentage 2 double equal to 0, it means that number is a even number, and L of I j percentage 2 double equal to 0, it means now both are even, then you will swap, otherwise you will not swap. Okay, so I am running this program. So I am inserting 10, 4, 3, 2, 6 and 1. तो 10 और 1 स्वैप नहीं हुए. रीजन इज
10 is a even number, but 1 is not a even number. 4 is a even, 6 is a even, that's why swapping is there. But 3 and 2, here 3 is not a even number, 2 is a even number, that's why there is no any swapping. So this is program number 3. Deepak, clear? सर यहाँ पे j is equal to length of L minus 1 का मतलब क्या हुआ? बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये देखो हमारे पास जो एलिमेंट है ना यहाँ पे 10 20 सपोज 10 30 40 50 60, तो ये 0 है, 1 2 3 4 5. तिश्नूर हमने 0 एलिमेंट एट 0 प्लेस में जो एलिमेंट है उसको 5th प्लेस में के साथ स्वैप करना है ना. यस सर. ठीक है, तो 6 कैसे आएगा? तो इसकी लेंथ कितनी है? ओके सर, समझ गया. Okay, clear? Yeah. So this is your program number 3. Now program number 4. All right, reverse of, yes, beta? इनपुट दिखा दो एक मिनट. You need output beta? नहीं सर, इनपुट चाहिए था. मतलब आपके आउटपुट विंडो और कोडिंग विंडो. ये कोडिंग विंडो है एंड आउटपुट विंडो इज दिस वन. चलो नेक्स्ट प्रोग्राम तो बहुत इजी है. मेक ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज और इनपुट ए लिस्ट एंड रिवर्स इट विदाउट यूजिंग इनबिल्ट मेथड. तो बेटा अगर हमें यहाँ पे जो प्रोग्राम बना रहे थे, हमारे पास जो प्रोग्राम था वो रिवर्स का ही प्रोग्राम है. अगर हम इसमें से कंडीशन हटा दें, ठीक है, कंडीशन हटा दो यहाँ से, नाउ दिस प्रोग्राम इज ऑफ रिवर्स. ओके, so I am running this program. Ten, 20, 30, 40, 50, 60. So it will be, oh, I have given wrong bracket, क्योंकि मैंने ब्रैकेट ब्रेसेस दे दी, और क्योंकि टप्पल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आप. ये देखो टोटली रिवर्स हो गया. गर्व क्लियर? यस सर. Okay. Now, question number 5. Make a program. Yes. क्या इनबिल्ट मेथड क्या है? Without inbuilt method. Inbuilt means यहाँ पे बेटा लिस्ट का एक रिवर्स मेथड भी होता है. जैसे आपने एक लिस्ट डिक्लेयर की, L is equal to 10, 20, 30, 40, 50, 60. And if you are doing L dot reverse, now check L, it is reverse. Means without inbuilt method. Inbuilt method को आपने यूज नहीं करना. ओके, सेम ही है. Yes, otherwise your program will be of 2 lines. ओके. Okay, तो inbuilt function आपने यूज नहीं करना. Question number 5. Make a program to initialize or slash input a list, half all the even values and double all the odd values. Very easy program. Very easy program beta. Question number 5. सर ये मैं कर चुका हूँ मैं प्रोजेक्ट में. Yes, so that no issue beta. I am going to discuss this. So take the list. Start here. Take length of L. Okay. No need of J. तो अब आपने क्या करना है कि if set one condition here, if L of I
means value, ठीक है, is percentage 2, it is a even value, it means you will halve that value. L of I is equal to L of I divide by 2. Okay, if you want to do the integer division, then use double slash here, ठीक है, else you will double the value in case it is a even odd value. बेटा L of I is equal to L of I into 2, और इसका बेटा ये एक शॉर्टकट भी है, शॉर्ट हैंड, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, स्लैश डिवीजन इक्वल टू 2, और यहाँ पे लिख सकते हो into equal to, it means Li is equal to Li into 2, it is a short form, ठीक है, और here is after change, ठीक है, so now I am going to execute this. So input a list, so list में I am inserting one the even values, some odd values. So even values are half and odd values double. But here is the answer is in a decimal, तो इसके लिए आप floor division भी ले सकते हो यहाँ पे. So if I am giving here 10, 3, 5, 7, 9, 6. So answer is here. Harshika, any doubt in this? No, sir. Now next question is, this is program number 5. Now program number 6. Make a program to initialize or input a tuple and search for a particular value in that tuple. तो हम एक टपल देना है और वैल्यू उस एक सर्च करनी है कि क्या वो पर्टिकुलर वैल्यू उस टपल में है या नहीं, ठीक है, तो हियर प्रोग्राम नंबर 6. So here I will get the enter a tuple, enter a tuple. So tuple contains, okay. Now take one variable n, int input, enter the value to be searched, start the loop from I to end of your list, ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि आपके पास यहाँ पे आप वैल्यू चेंज नहीं कर रहे, तो यू कैन टेक हियर सिंपली L. मैं इन प्लेस ऑफ L आई एम यूजिंग हियर T. तो इफ I double equal to n, then you will display print element found at
लोकेशन, तो अगर आपने यहाँ पे लोकेशन भी डिस्प्ले करनी है तो फिर आपको रेंज यूज करनी पड़ेगी। क्लियर? इफ यू वांट टू डिस्प्ले दी लोकेशन, तो इफ आई इन रेंज, सर यहाँ पे फॉर आई इन रेंज क्यों आया? फॉर आई टी के ब्रैकेट में मैं आई बेटा मैं ठीक कर रहा हूँ बेटा, भी आई एम करेक्टिंग दिस वन, लेंथ ऑफ टी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इफ टी ऑफ आई, तो ये T0, T1, T2, T2, 3 लाइक दिस, अगर वो किसी नंबर के साथ अगर मैच करके, तो हमने डिस्प्ले करना है एलिमेंट फाउंड एट लोकेशन। उसकी लोकेशन कहाँ पे आएगी? आई। ठीक है, I+1। वाई I+1? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर दिस द इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, बट एज ए ह्यूमन बीइंग वी स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम 1। तो हम ये कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। पर अगर जब हम लिस्ट के बारे में या टपल के बारे में कहेंगे तो फर्स्ट जो एलिमेंट 0 लोकेशन के ऊपर होता है। ठीक है, तो आई एम इंप्लीमेंटिंग दिस। एंटर ए टपल, here I am checking, here is one error. Oh, T, here T. Enter a tuple. So in bracket I take 10, 20, 30, 40, 50. Okay, animal to be searched 30. So it is saying it found at location 3. So third के ऊपर आ रहा है 1, 2, 3. ठीक है, पर according to the computer terms, it is in which index? Second index. That's why we are using here I+1. Any doubt in this, Amit? No, sir. Okay, beta. Program number here 7. Make a program to initialize or input a tuple to store the marks of a student in 5 subjects. Calculate and display grade as per the following condition. तो हमने क्या करना है, एवरेज सम फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है, देन असाइन करना है ग्रेड। क्लियर? तो प्रोग्राम नंबर 7, प्रोग्राम नंबर 7, तो एंटर marks in 5 subjects. The user will enter the marks in 5 subjects. Then use here marks are, so we will display the marks. Then declare one variable sum, yeah, total. So start the loop from I to length of t. तो आप यहाँ पे रेंज भी यूज कर सकते हो, आप इसको रेंज के बिना भी यूज कर सकते हो। अगर आपने रेंज के बिना यूज करना है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आई में क्या होगा, फर्स्ट मार्क्स, देन सेकंड, देन थर्ड, लाइक दिस। यूज हियर टोटल इज इक्वल टू प्लस टोटल प्लस आई। तो आई इज मार्क्स, तो टोटल की बिगिनिंग इनिशियल वैल्यू इज 0। टोटल में 0 वैल्यू। ठीक है, 0 प्लस फर्स्ट मार्क्स, देन सेकंड मार्क्स, थर्ड मार्क्स। तो आप इस तरीके से, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, शॉर्ट हैंड इज प्लस इक्वल टू।
Here, now print यहाँ पे एक मैंने प्रिंट पहले आपने प्रिंट total marks of the student. So here you will display total, then print average. So for calculating the average, I will use AVG variable. So here AVG is equal to total divided by how many subjects? 5. Okay. Now for grade, if AVG, here condition is greater than equal to 75, then grade, I am taking one variable, grade is equal to A. If average is greater than equal to 60, grade is equal to B. If average is greater than equal to 50, grade equal to C. Else grade equal to D. Now display the grade, print grade, display the grade variable. So I am executing this program. So enter the marks in 5 subjects. You remember in the shape of tuple because the program is of a tuple. So marks are 56, 78, 89, 67, 88. Total marks 378, average 75.6. According to the condition, if your average is above 75, 75 or above, so your grade is A. It is correct one better. So here 7 programs we discussed. Okay. Tomorrow we will discuss question number 8, 9, 10 and then project work. Okay. Students, any सर doubt कोडिंग here? दिखा दो एक बार. Yes, sir.